Good afternoon, everyone. I, on behalf of Export Promotion Council for Handicrafts, welcome you all to this very important session on India-UK CETA, the opportunities that it offers to the handicraft exporters, the rules of origin, e-certificate of origin, and various compliances that needs to be undertaken by the exporters in order to take the benefit of India-UK CETA is the topic of today's discussion. As you all know, the agreement has been signed over an year ago and offers access to over 99% of our exports to the UK, giving immense potential for the exports of the country, especially handicraft sector as well. Today we have with us Mr. Mihir Shah. He is a renowned faculty and has been closely associated with us, delivering lectures in our various online and offline programs. He is an international business consultant, advisor, trainer, and speaker with extensive expertise in foreign trade policy, customs, GST, FEMA, RBI regulation, and so on and so forth. He is an MBA in international business, LLB, and commerce graduate. He has conducted around 200 training sessions. He does that annually, around 200 training sessions. We are also joined in by Shri JP Singh. He is a prominent member exporter from Muradabad. So I welcome both of you, and I would go to Mr. Mihir Shah first. Mr. Shah. Yes, sir. Welcome to you. Thank you. And we have participants who have joined us from across the country. I would request them to carefully listen to what is being told, what is being said by our guest faculty, and write down your questions. Mr. Shah is also going to give you live demonstration. Mr. Shah, am I right? Yes, How sir. to go about filing rules of origin and doing due diligence. Yes, sir. We want to give you that demonstration as well. So over to you, Mr. Shah. Thank you. Very good afternoon, everyone. And thank you so much, as always. Pleasure to speak to a very wonderful group of exporters, especially handicrafts, because not only that they increase India's export, but they look and feel very fantastic and always adds a little smile onto people's face. Just to start with the context. जी सर, हिंदी में भी करेंगे. डोंट वरी सर, हिंदी में ही भी रहेगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों चलाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी हरीश जी. So thank you so much for reminding me any which ways. So the context, just to give you, is I was just looking at cake 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ने मंथली एक्सपोर्ट डेटा निकाला, and we are growing at about 17% in terms of exports. The value of merchandise exports करीब $174 billion is what it is reached. Now the question is कि भाई challenges आ रहे थे, issues हो रहे थे, फिर भी we are able to do it. So if you are able to do that in those difficult times, so when the exports are booming, I'm sure the exporters will be able to do it much better. पर challenges तो आएंगे. Whether it is, sir, I will conduct in English as well as in Hindi. I'm sure in both the languages you will be able to understand me, and I'll make sure that both the audiences have been taken care of. Rajesh sir, don't worry on that. So in current times when we are looking at tariffs, कहीं पे challenges हैं, Middle East crisis,
maybe erstwhile Sri Lanka, then before that Bangladesh, or maybe Russia, Ukraine. ये सारे challenges के time पे there is one silver lining which the government has been constantly endeavoring. Last 6 साल में हमने करीब 8 FTA साइन कर लिए हैं, and that free trade agreements gives you an access, एक मौका देते हैं, that is what I call it the foot in the door, कि आप ये नए मार्केट जाइए, गो टू दिस न्यू मार्केट, गो टू दिस मार्केट बिकॉज आपके लिए ये बेहतर है. कैसे बेहतर है? ऑफ कोर्स द डिमांड ऑफ द बिजनेस इज देयर, दैट स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस इज अवेलेबल, बट नाउ विथ एफटीएस, बिकॉज दे रिमूव एंड एलिमिनेट सर्टेन चैलेंजेस, हम ड्यूटी से भी एडवांटेज में है. सो टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स एंड टू फोकस ऑन वन ऑफ द latest FTA which India has signed is the India-UK CETA. So let me quickly share the screen with you guys and we go ahead on this. Sir, the screen is visible. Can I just get a confirmation on this? Yes. Okay. तो पहले सिंपल समझ लेते हैं, कुछ बेसिक से चालू करेंगे and then we'll go ahead and of course we'll go with the demo as well. So the clarity is very, very clear. What is FTA? We've talked about FTA, but at the same time, I as well as Ravaji use the word CETA. तो अभी ये सेटा क्या है, ये सेपा क्या है? सिंह साहब, यू विल बी सरप्राइज, वन ऑफ द सेशन आई वाज डूइंग इन द फिजिकल एंड समबडी सेड, सर ये इंडिया यूके का सियापा क्या हो रहा है? मैंने बोला सर कोई सियापा नहीं है. सही बोला. कोई सियापा नहीं है सर. नहीं नहीं है, हमने सुना है, देयर इज अ सियापा हैपनिंग. Then I realized, okay, he's talking about a SEPA agreement, but of course it's not SEPA, it's CETA. But yes, what is SEPA? What is CETA? What is this all confusion? So please understand, these are all the same names of a commonly understood context, which is called free trade agreements. अब ये free trade agreements होते क्या है? Basically, two or more countries agree to reduce tariff. अभी logic क्या है? I'll give you an example to understand. आप कोई आपके लोकल ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे and everything is sold to you at MRP, right? That is supposed to be. You cannot be sold more than MRP. टेक्निकली हम झगड़ा करते हैं ना, कोई बोलता है अरे पानी की बोतल 10 रुपए की फ्रिज में रखी तो 12 क्यों? सो एमआरपी इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस. बट if you go to a festival time and you buy some goods worth 5,000 rupees, and while you're moving out you ask, अरे मेरे को एक पानी का बॉटल दे, and that guy does give you at free of cost, is he allowed to give? Obviously. एमआरपी से कम बेचने में के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस में डिस्काउंट देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर एवरीवन द प्राइस रिमेन्स द सेम. Similarly, when you are trading within the globe, सारे countries, every country has to be considered equally. I cannot have a different tariff with what I don't like with say X country or Y country, or I like another country so I have to give better. I cannot keep changing that. So my base rate has to be same, which is called the MFN rate or most favored nation, क्योंकि हम सब WTO के अंदर है. We are all covered by the WTO. Or we are part of WTO. But then what happens? We create small groups. It could be a bilateral group, which is the two countries, or it could be multilateral group, like more than two countries. And these groups agree to reduce tariffs. Tariffs means customs duty. But if customs duty tak hota, so it could have been just a duty tariff agreement or something. So why free trade agreements, or why this CETA and SEPA and all of it? Because now we are not focusing only on tariff, we are focusing on multiple other things which are called non-tariff barriers, intellectual properties, government procurement, सारा कुछ देख रहे. To an extent, अभी की एग्रीमेंट्स में ऐसा भी है कि अगर आपको ह्यूमन ट्रैवल के लिए भी कुछ एक स्पेसिफिक चाहिए, then you will get it. To give you a context of this, the India-Australia FTA, we are going to talk on India-UK, but just to give you a context of how bigger these agreements have gone. India-Australia FTA, we have a special visa category कि हर साल 1,800 visas will be available for yoga teachers and chefs who can go and work for 3 years. ये FTAs के अंदर आने लग गया है. Now, if it is part of the FTA,
Free trade agreement is restricted only to the goods. So we start calling it in different names, and those names are CETA or SEPA or ACTA. What is CETA? Comprehensive Economic Trade Agreement. SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Trade Economic Partnership Agreement. So we have started taking more than just goods. सिर्फ goods पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा bilateral business पे फोकस कर रहे हैं, and that's why the names have got difference. Though generally we will talk it as FTAs. India currently has this agreements live, except one, which is the last one, India EU. India EU is only signed, it is not active. It is a multi-country agreement or a multilateral agreement, which will probably take about 6 months to a year to come live. So you have bilateral agreements like India-Japan, SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, or India-Sri Lanka FTA, or India-Mauritius SEPA. Then you have multilateral agreements like India-ASEAN. In fact, in the European Union, we have already a multilateral agreement called India-EFTA-TEPA. EFTA is European Free Trade Association. 4 यूरोपियन कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लेसिंटन. ये 4 कंट्री ने एक ग्रुप बनाया है विच इज कॉल्ड EFTA. इंडिया एंड EFTA together have a FTA called Trade Economic Partnership Agreement TEPA. Latest to join in the list, of course, is India UK. उसके कुछ दिन पहले India Oman SEPA came into existence. That means from 1st of June, India Oman came in. But today we are focusing specifically to our discussion on one of the leading markets for handicraft industries, one of the market जहां पे business potential बहुत ज्यादा हो सकता है, and with this FTA agreement आप उसको और ज्यादा कर सकते. We are talking about the India-UK CETA, Comprehensive Economic Trade Agreement. Again, please understand, CETA is just a name, of course, because it has a lot of other things. आप locally FTA बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, but FTA, it's like आपके पास मोबाइल फोन आईफोन है पर आईफोन 14 प्रो मैक्स है या 14 है, कोई फर्क नहीं पड़ता. वो इंटरनल जब भी आप खरीदने या बेचने जाओगे तभी फर्क पड़ता है. बट द ओनली डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि क्योंकि ये सेटा है, वी आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड ऑन गुड्स, वी डू मल्टीपल थिंग्स इन दिस एग्रीमेंट, इंक्लूडिंग talking about, IT services, talking about simplification, talking about lot of other advantages which may come up in the near future. रावत जी ने स्टार्टिंग में बताया that these agreements were long started, but ultimately we will only be able to do it live now. So just to give you the timeline, 2022 में ये negotiations चालू हुए, 2025 में we reached a principal approval, and post that, of course, there were some challenges. In July 2025, Indian cabinet gave approval. 24 July, formally agreement sign हुआ in the UK, and then we've now have that in 1 year after, that is on 15th of July 2026, that the agreement is live. Apart from Baki agreements and other processes, why this agreement is very, very important from an Indian standpoint. And I'm very, very clear, Jeff Singh sir, we are talking about Indian exporters and we are not talking about the other way right now. Of course, FTA is always two ways, which means if you want to start doing some imports from UK, you can do that as well. But our focus is only India's exports to UK. We all know HSN codes. आपके प्रोडक्ट्स के HSN कोड्स आपको मालूम होंगे. ये सारे HSN कोड्स की जब हम बात करते हैं, राइट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 97, इंडिया exports whatever number of HSN code and products, it will from 15th of July, it will 99% of that is become zero. 99%. So leather, textile, marine, gems and jewelry, toys, any sector you say, chemicals, auto components, almost all of these products have become zero when they land in UK. Mind you,
UK will have about 6 to 12% import duty on a normal situation. Now somebody may say, सर हमारी टेक्सटाइल पे नहीं था, हो सकता है नहीं था, बट जिस पे था उस पे तो कम हो गया, जीरो. IT services of course has been there. We also signed a double contribution convention just to give you context how important this is. ये आगे जाके शायद many of you may want to explore not just selling into exports but creating companies in UK. In the UK, there is a rule for an employee to contribute 30% of its salary as social security. 30% उसको देना पड़ता है, कंपल्सरी है. Effectively means that उसकी 30% सैलरी चली जाएगी. Now, if you are an Indian company creating a UK entity there, and if you have to start paying that salary, you will have to either pay 30% more because the person who you are employing, उसको तो 30% कम लग रहा है. So now if Indian professionals go and work there, because of this DCC, Double Contribution Convention, for 3 years, वो 30% contribution नहीं करना पड़ेगा. Effectively, you save money. Your employee will save money. That contribution mandated for the social security is not to be done. Of course, क्योंकि ये सेटा है, that is comprehensive economic trade agreement, हम सिर्फ goods के लिए नहीं, not only for products, it is also for services. So telecom sector में testings के लिए we have enabled it. We have started from last FTA prior to this, from Oman FTA and from others, self-certification, and I will explain you that you don't need to go to a authority, but you can self-certify these. And very interestingly, goods below or up to 1,000 pounds, let me be clear, it is 1,000 GBP, 1,000 British pounds, that is all your e-commerce parcels, you do not require a certificate, your mere declaration is good enough. Now that is the background. On 15th of July, as we all know, it has become live. Now, when I say live ho chuka hai, what happens it is, let's look at the facts. And I give you some examples, and we will also try and explain you how it can be found. So few examples of what are the products which are really getting you the benefits. Agarbatti. I'm sure many of our members are exporters of agarbatti. 6% was a normal duty. Now, effective India UK CETA, it is 0. Handbags, material of non-basket work. So it is excluding the wicker work or a basket work. 2% was a normal duty. 0 effective of this agreement. Imitation zari thread. Sorry, the typo error. It is not zar, it's zari thread. Imitation zari thread. 4% was normal. Now it is 0. Tableware of bone china or soft porcelain. Now look at the advantage here. 12%. Many of you may not even have these profit margins. तो आप ड्यूटी आपके प्रॉफिट के ऊपर 12% लग रहा था, अभी वो 0 लगेगा. Straight away the landed cost to the customer is less. You may not have any direct impact, but because of that your buyer will keep on coming to India because tableware of bone china and soft porcelain is going to now be at 0%. The ladies would love it. German silver jewelry, 4% was the normal duty. Now it is 0. Exporters of bamboo furniture, 4% again was the normal duty. Now it becomes 0. To be very honest, मैं ये slides आपको बताते रह सकता हूँ because remember the whole context when we started, 99% is 0. I'll give you a very easy access. There is a schedule which is published as a part of the India-UK CETA agreement. That is called Annexure 2A. And Annexure 2A has a schedule. 2AA is for India and 2AB is for UK. तो उसमें chapter numbers दिए हैं and they have said when will the commitment will become 0. And
they will have code. They'll have code A, B, X, EX. And the code A stands for that the custom duty in the originating country will become zero or eliminate from the date it gets enforced as agreement. The date of entry we have already known 15 जुलाई हो चुकी है. Effectively what it means, जहां जहां पे भी A लिखा हुआ है 15 जुलाई से UK will start giving zero. And mind you, sir, look at the left hand side. We are not even going at 4-digit level. हम सारे chapters की बात कर रहे हैं. Straight away at chapter level, we have given everything zero. So whether chapter 24 to 33, कोई भी आपकी products हैं, especially 33 में काफी products आएंगी, zero A है. Look at chapter 34 to 44, wood related item है, plastic, rubber, any of your products, again it is zero. Look at the right hand side bottom, 45 से लेके 56. Anything again, A, 0. Look at 57 to 68, all A, यानी carpets हो गए, आपके floorings हो गए, your headgear, textile products, all of it is zero on day one. It's A. If you're into metal items, steel, copper, aluminium, all of them have become zero to an extent. If I can keep going, the entire schedule as it is obviously, now how do you make 99% of your export zero? अगर आप सब नहीं करोगे तो yes, there will be some elements in agri commodities which have not become zero on day one, but as that is 0.1%, I mean 1% of the entire thing, which as handicraft exporters आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके लिए सारे प्रोडक्ट्स ऑन 15th of July onwards is become zero. I think there was some small confusion, and I'm been told, and I have just got this information. Rawat Saab can again, or EPCH can also confirm that. But the clarification which has come is very clear that the exports should have happened, that is your BL should have happened after 15th of July, because there was a lot of demand from your buyers कि यार मेरी माल तो जून से निकला है क्योंकि 15 जुलाई के बाद वो एंटर हो रहा है यूके में, तो आप सर्टिफिकेट दे दो. आप नहीं दे पाएंगे. You will not be able to do it. Your goods should leave, or your BL should be onboarding, should be after 15th of July. Today we are talking a 1 month after July. So I don't see any of those pendency matters coming anymore. But in case your buyer is insisting, please tell them very clearly वो नहीं है. तो हमको क्या मिल रहा है? What are we getting out of the India UK CETA agreement? We are aware. We are getting a complete access to this new UK market, which of course extended up to Scotland, and then of course the ripple effect will happen in other markets. But nothing is just over the counter. Any free trade agreement comes with something very, very important, and that is called rules of origin. जब तक आप ये नहीं समझोगे, you will not able to get the real benefit out of it. और ये रूल्स ऑफ ओरिजिन समझने के लिए 4 चीज जरूरी है. आई मीन प्रोसीजर समझिए, 4 चीज चल. वन इज कॉल्ड रूल्स ऑफ ओरिजिन. एक कॉन्सेप्ट है क्यूमुलेशन. फिर आता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स और डी मिनिमिस या टॉलरेंस. हम चारों के बारे में समझेंगे. इट इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि आप ये धंधा खुद कर रहे हो, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. So first understand rules of origin. I give this example and I want to continue with that example to most of us. अगर आपको कहीं जाना है, कोई कंट्री आप ओवरसीज विजिट कर रहे हैं, and if that country says you do not need a visa if you are an Indian citizen or Indian person, how do you prove it? You will show your passport. You will give your passport to say, sir, I am Indian citizen, see it is written, so I should not get a visa. Exactly the same thing. Your goods are allowed in that market, in that country, without duty, provided they are Indian goods. Please understand, ये benefit Indian goods और UK goods के लिए, because they too have signed it, right? UK might have signed it with some Bangladesh, Sri Lanka, Australia. That's a different story. We don't need to bother about it. But Indian goods के लिए है, so it has to be justified as Indian. So first and foremost, rules of origin is most important to identify that does this goods qualify for the benefit or not. क्योंकि अगर qualify ही नहीं करेगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे. So without rules of origin, there cannot be an FTA. Now the question is, can I or should I be 100% Indian? Can I not have
My parents, can I not go and study abroad and then come back in Indian? I can, right? Same way, क्या मेरे goods 100% Indian ही होने चाहिए? Now, in which means, can I not have any raw material which is imported? That exactly is the understanding which each FTA has, and that जो आपको या जो as an exporter you have to understand the criticality. First and foremost, please understand we are talking about goods originated in India, which means goods have to be manufactured in India. Either you manufacture or a manufacturer manufactures in India, and you as a merchant exporter trade. But India में बना होना चाहिए, it cannot be directly imported. Second, if that manufactured goods which are Indian origin, what are the raw materials which are consumed? So there are two possibilities and very simple. या तो इट इज होली ऑब्टेन इन इंडिया, यानी कोई भी रॉ मटेरियल है ही नहीं, इंपोर्टेड. बैम्बू, बैम्बू प्रोडक्ट्स में आपने सर बैम्बू लिया है, वो तो इंडिया में हमने ग्रो किया है, उसको हमने बनाया, फर्नीचर सब कुछ, उस पर वार्निश लगाया, उस पर कुछ भी लगाया, एवरीथिंग इज इंडियन ओरिजिन, इट इज होली ऑब्टेन, मैटर ओवर, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड प्राइस. बट देन इन सम केसेस, in some things you might have not wholly obtained, yani aapne kuch raw material, something which is part of your manufacturing, maybe a fragrance for your agarbatti, maybe a thread or a yarn or a zip, आप एक बैग बना रहे हैं हैंडीक्राफ्ट की, या पाउच बना रहे हैं, या पर्स बना रहे हैं, एंड यू आर यूजिंग इट, और यू आर मेकिंग सम इनले वर्क, और उसमें आप जो कलर यूज कर रहे हैं, दैट पिगमेंट यू आर इंपोर्टिंग. एंड व्हेन आई से इंपोर्टिंग, इट इज नॉट नेसेसरी यू इंपोर्ट, आप इंडिया से बाय कर रहे हैं पर इंपोर्टेड यूज कर रहे हैं, तो ये सेकेंड कैटेगरी में आएगा, विच इज कॉल्ड नॉट होली ऑब्टेन्ड. अच्छा, नॉट होली ऑब्टेन्ड है तो क्या करना है? सिंपल है, उसमें भी बहुत क्लियर है. पहली बात, इट हैज टू मैन्युफैक्चर, सो देयर हैज टू बी सम प्रोसेस. एंड देन दो चीज का ध्यान रखना है कि या तो इट विल बी अ नॉर्मल मिनिमम प्रोसेस जो चाहिए वो, प्लस वैल्यू एडिशन, वी कॉल नॉर्मल रीजनल वैल्यू कंटेंट, या तो कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल है एग्रीमेंट के अंदर, प्रोडक्ट पे HSN कोड पे प्रोडक्ट पे कोई कंडीशंस डाल दिए तो वो है, बट इट हैज टू गो थ्रू अ प्रोसेस. सो व्हाट इट कैन नॉट गो थ्रू, क्या मिनिमल प्रोसेस जो अलाउड नहीं है, ये समझ लीजिएगा, तो देन आई थिंक हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स इज गॉन. व्हाट इज नॉट अलाउड, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स, प्लीज अंडरस्टैंड. सिर्फ रीपैकिंग पैकिंग करना अलाउड नहीं है, इट इज नॉट कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. सो यू से सर आई ब्रिंग इन बल्क, मैं यहां पे रीपैक करूं, चलेगा? नहीं चलेगा. वॉशिंग, क्लीनिंग, रिमूविंग डस्ट, ऑयल पेंटिंग, ये नहीं है. आपने कोई प्रोडक्ट लाया, यू आर जस्ट डूइंग कलरिंग, व्हाइट पेंटिंग, नहीं होगा. टेक्सटाइल में आपने सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर आपने बैंड्स लगा दिए, बीड्स लगा दिया, आयनिंग, प्रेसिंग, ऑल ऑफ दिस बेसिक एक्टिविटी, पेंटिंग, पॉलिशिंग, coloring, affixing label, logos, or any signs marking, simple testing, calibration, these are all not called as manufacturing or process. ये allowed नहीं है. This will not qualify. Allowed नहीं है यानी you can export, but duty benefit नहीं मिलेगा sir. They are not qualifying, which means I cannot buy a ready-made product and export. I have to really convert it. Now, when I say converted, उसका मीनिंग क्या, डेफिनेशन क्या है? उसके डेफिनेशन दो है. एक तो फॉर्म चेंज होना चाहिए. आई कम टू व्हाट आई मीन बाय फॉर्म चेंज. एंड सेकेंड, देयर हैज टू बी अ वैल्यू एडिशन. Every FTA will have a value addition requirement, and I'll come to what is there in India, UK. पर पहले फॉर्म चेंज की बात करते हैं. द वेरी सिंपल मेथड ऑफ फॉर्म चेंज इज कि आपका जो वॉट एवर इज योर रॉ मटेरियल ना, that raw material list, that HSN code, and your finished good raw material, there has to be a difference. सर आप लॉजिकली कहीं पे भी देख लीजिए, फैब्रिक का रॉ मटेरियल अलग है, आपकी बैग्स का रॉ फिनिश गुड्स का HSN कोड अलग है, आपके अगरबत्ती के स्टिक्स का, केमिकल का, रॉ मटेरियल का HSN कोड अलग है, फिनिश गुड्स का रॉ मटेरियल HS कोड अलग है, स्टील प्रोडक्ट्स में स्टील का HSN कोड अलग है, बर्तन के HSN कोड अलग है. सो एवरी प्रोडक्ट विल हैव अ कन्वर्जन. So if you follow that criteria, and what kind of criteria, कि all your raw material, either it can have a change in chapter number, यानी पहले दो digits ही change हो रहे हैं, fantastic, excellent, easy to understand, very difficult. What is the meaning of this?
Sir, my goods are manufactured under chapter 73, articles of steel, but my raw material is procured under steel, chapter 72. Change of chapter straight away. I'm exporting carpets. My raw material comes under chapter 60, 61 or under 50, 52. Textiles. My chemicals comes under chapter 28, 29. पूरा चैप्टर नंबर चेंज हो रहा है. ओके, लेट्स गो अ सिंपलर वन. सो चैप्टर चेंज नहीं हो रहा है. आई एम मैन्युफैक्चरिंग अम्ब्रेला, but I'm buying umbrella cloth which is under same chapter but different heading allowed, but provided the condition is CTH, change in tariff heading, यानी 4 digit level पे change, and most limited change, very small change, which is change in tariff subheading CTSH. Sir, CTSH is very easy to do, but very small. The chapter number is the most difficult, but very easy to understand the difference. So you have to understand what is the criteria, and every criteria is going to be mentioned in the agreement. We will discuss this as I show ahead what is the agreement differences. Now, how do you calculate these details? So the FTA, and in this case, the India-UK FTA provides you two calculation. Number one, so basically they both calculations are available everywhere in each of the agreements. So they in this case, the word which we use is called QVC, qualifying value content. The general requirement, please understand, basic fundamental requirement is कि आपका इंडियन कंटेंट एफओबी वैल्यू का 45% मिनिमम होना चाहिए. What does this mean? That Singh साहब, you can have 55% imported content, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. But two things, it should be formula based raw material, not your finished goods. So if your raw material, if you have a fabric, if you have beads, you have some accessories, anything up to 55%, because 45% should be in your build down method, should be your domestic, or 45% should be your imported, then it is fine. Now, how do you calculate? So there is a very simple method. Either you take Indian content and divide it by FOB value. So value of originating material, originating यानी Indian material, यानी imported material को आप साइड में कर लो. बाकी के जितना भी आपके हैं रॉ मटेरियल की वैल्यू, that divided by your FOB value, multiply by 100, what is the percentage you're getting? In that build down, at least it should be 40% of your FOB value or more. आप बोले reverse. Sir, I have only one imported item. I can calculate that easily. So do one thing, take your FOB value minus your imported content, divided by FOB value. How much is the content? Do that in build down method and you'll get the same answer. So you get the answer that is comfortable for you to justify. Right? So the calculation is the key thing which you'll have to work out on every single export or every single thing, transaction. Now, by default, under India UK, it is 45% on the build down method. What is build down method? Yani 45% or more so 55% or more should be Indian content, 45% should be imported content. But there is something called as PSR, product specific rules. यानी ये 45-40 चलेगा या कम ज्यादा होगा, तो हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स में जाएंगे, which it says that for every chapter there will be some condition. और कंडीशन क्या है? नंबर 1, there has to be change in tariff heading and there has to be say chemical reaction. Let me go to something which is more relevant to us. So if you see in chapter related to garments, which is from 55 to 66, आप देखोगे सब में लिखा है CTH plus standard QVC. Standard QVC 45%, CTH यानी change in tariff heading. As long as your raw material to finished goods heading level यानी 4 digit level पे change हो रहे हैं, plus you are able to add
what 45% डोमेस्टिक देन है। आई गिव यू वेरी क्लासिक केस, आई थिंक किसी ने क्वेरी भी है बट उसके लिए भी काम आएगा। चैप्टर 69 सिरामिक, and carefully please understand this. Ceramic products, the condition for exporting to UK, it is CC, change in chapter, right? Which means not 1 gram of your product can be of the same HSN code. यानी अगर आप ceramic products chapter 69 export कर रहे हैं और if you have any imported, nothing can be of chapter 69, it has to be anything else but not 69. आप ये नहीं कर सकते कि मैं रॉ ला रहा हूँ सिरामिक प्रोडक्ट्स, यहाँ पे उसको पेंटिंग, एड वैल्यू एडिशन, कलरिंग, रीपॉलिशिंग, पॉलिशिंग सब कुछ करके बेच रहा हूँ। नो, your import raw material should not have anything which has to do with 69. That is called change in chapter number, right? So you have to understand कि क्या condition है, and this is available on the Commerce Ministry's website, commerce.gov.in. I will show you all of these in a bit, but just to give you context. ये सारे एग्रीमेंट, सारे डॉक्यूमेंट, सारे डिटेल्स अवेलेबल है। Articles of iron and steel, maybe you require some CTH plus qualifying content, not less than 50%, 55%, 45%. तीन ऑप्शन है, बेस इज इट। सो अगर मैं स्टील के कोई प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, देन आई विल रिक्वायर मिनिमम 45% ऑफ द डोमेस्टिक मटेरियल। पर एक चैलेंज है कि सर आपने बोला है CTSH चाहिए, यानी चेंज इन टैरिफ सब हेडिंग या चेंज इन टैरिफ हेडिंग चाहिए। आई एम एबल टू डू 40%, नहीं, मेरा तो 60% डोमेस्टिक है, 70%, 90% डोमेस्टिक है। बट एक रॉ मटेरियल जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, इट इज ऑन द सेम चैप्टर हेडिंग या सेम प्रोडक्ट चैप्टर, देन व्हाट डू आई डू? विल आई बिकम डिस्क्वालिफाइड? दैट इज एग्जैक्टली वेयर एक रूल आता है जिसको बोला जाता है डी मिनिमिस। डी मिनिमिस यूके अग्रीमेंट में टॉलरेंस नाम दिया है। आर्टिकल 3.9 is where it is covered, and it says there are several categories depending upon what your HSN is. तो कहीं पे 7.5% है, कहीं पे 12.5% है, and in some other cases it is 12.5% by quantity. Basically that if you are able to qualify your other thing, but क्योंकि आपको एक कंडीशन जैसे CTH चैप्टर हेडिंग चेंज करना है या चैप्टर हेडिंग सब हेडिंग चेंज करना है या चैप्टर नंबर यू वांट टू चेंज एंड इट इज नॉट हैपनिंग, बट 1% or 5% is the only matter. In this case, let's say it is up to 12.5%, then that will be ignored. It is called tolerance or de minimis. हम इसको ignore करेंगे, आपको FTA में benefit मिला जाएगा. You will still quantify and still value it. Obviously, that doesn't mean, oh, can I just import and export? No, you can't. Because import and export will defeat both the conditions. You cannot say, I'm still doing value addition of 200%. I don't need 200%. I need the value addition which is required. But your change in tariff, if it is conditional, it's 12.5%. In some cases, in some earlier chapters, that is up to chapter 14, 15, it is up to 7.5%, which is there. Point, what we have to understand here is the benefit is available for all the products, but the benefit has to be proven. आपको उसको प्रूव करना है, आपको उसको कैलकुलेट करना है, आपको उसको चेक करना है that have you qualified for it. Merely because you have an Indian label or merely because you are saying it will not happen. At the same time, क्योंकि मैं import करता हूं कुछ raw material, that also doesn't become disqualifying. Imported content कितना है आप कैलकुलेट करिए. You are okay to have an imported raw material, you are okay to have imported inputs plus domestic input करके आप नया प्रोडक्ट बनाइए या मैन्युफैक्चर करिए, and that product will be eligible. The final thing is that you need to show some proof. Now that proof is given by way of a certificate of origin. India-UK agreement also calls it as proof of origin, and under article 3.15 each, UK को भी allowed है, India को भी allowed है. India has in fact two options. India can give what is called a declaration of origin,
At the same time, it can give a certificate of origin. India will authorize certain agencies and authority which will issue it. But more interestingly, remember, for value less than 1000 GBP, that is 1000 pounds sterling, you don't need a certificate, just a declaration is good enough. Now the question comes, where will you give the certificate to? So the authority which has been notified is the DGFT and the EIA, but we've also gone ahead and got a self-certification option available. So now the exporters can go and self-certify it. So where do you go and what do you do? So the website address, I'm sure most of you are already aware of. The platform is called Trade Connect, Ministry of Commerce, DGFT ka platform. It is called Trade Connect. The website address is trade.gov.in. For all the exporters, don't get worried. We are going to show you a live demo. I'll access the website and show you. ये सिर्फ concept समझ लीजिएगा so that you understand the basics. Practically, we will go ahead and look at it. Each of your FTA agreements are clearly defined. In fact, if I'll just zoom this for you, जहां जहां पे हमारे पास अभी self declaration and agency meaning the authority, you will have two options, either to go for self declaration or for agency. And DGFT, especially for India UK, has notified or given a trade notice clearly specifying that who are eligible. Any exporter who is not under DEL, that is called as denied entity list, who has a digital signature and who can upload their certificates and details, are eligible for self declaration. आधार से नहीं होगा. If you are issuing Aadhaar से नहीं होगा. And once you submit it, you can get this declaration certificate downloaded. Okay, it gets downloaded. You can download it. This is how your certificate looks. Of course, this is the template. This is the format. Now, let me quickly go to the website and probably show you how this works so that it is little more clear for each one of you. Let me just swipe the screens. Acha, by the way, we are at trade.gov.in website. It'll ask you for the access. This is the same access which you use for your DGFT platform. It is the same access which you use for your इसमें फिर ट्रेड कनेक्ट में सबका लॉगिन होना जरूरी है. हाँ सर, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ट्रेड कनेक्ट की वेबसाइट पर सर लॉगिन आईडी इज द सेम एज व्हाट यू यूज फॉर योर डीजीएफटी आईसी एक्सेस. इट इज द सेम फॉर योर नॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. तो नया नहीं बनाना है, आप सेम यूज करोगे. अगर ऑफ कोर्स इफ यू डोंट हैव इट, विच आई डाउट, बिकॉज सबके पास आईसी है, सबने आईसी अपडेट हुआ होगा, एवरीबडी वुड हैव डन इट्स द सेम लॉगिन. ओके, बट फॉर एनी रीजन इट इज नॉट, देन यू हैव टू रजिस्टर. But you will have to go and register here. Now I'm using a access of EPCH. आप आपका यूज करोगे. There's this option called certificate of origin. And the moment you click, ठीक है, आपको पहले ही वो बता रहा है कुछ. And most of the time ये शायद मैं भी 1000 बार इसको इग्नोर कर रहा हूं, बट आज के लिए आपको समझना जरूरी है that for certifications where you want to self certify, तो जैसे आप कोई चीज को सेल्फ सर्टिफाई करेंगे तो उसकी सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना है. सो इफ यू वांट टू स्टार्ट यूजिंग दिस बेनिफिट, देन प्लीज यू विल हैव टू गो टू द appropriate section and upload the details. I will show you. You can go down. आपको यहाँ पे दिख रहा है upload scanned signature and generate self declare COO. आप यहाँ पे अपलोड करोगे आपकी सिग्नेचर. You will actually upload an image and your digital signature. Of course, you will upload this signature in a JPEG file along with, of course, digital. तो वहां पे स्टैम्प के जैसे आपकी जैसे डिजिटल सिग्नेचर आ जाए.
People are ignoring it. Of course, you are want to ignore it because you might going to go to the agency. For everyone, the window is very straightforward. Apply for certificate of origin. आप जाके क्लिक करेंगे अप्लाई. ये मैंने एक ड्राफ्ट क्रिएट किया था. आई विल जस्ट डिलीट दिस फॉर द रेफरेंस, बट लेट मी गो एंड क्विकली show you a fresh one. Like any other certificate of origin, there are 3 and 3, 6 and 2, 8 steps, जिसमें 2 step is basically your confirmation and finally the summary. Concepts क्या है? हमने अभी ऑलरेडी समझ चुके हैं कि भाई we need to talk about export goods, we need to clarify the input content, and then obviously it has to be exported out of the country. Clear? In short, what are we trying to say? कि जो हमने ये कॉन्सेप्चुअल समझा है, अभी आप उसको डॉक्यूमेंट्री यहाँ पे ऑनलाइन डालिए. Basic detail talks about basic information. Certificate detail talks about certificate. Export detail talks about your finished goods. Input talks about your raw material. जो हमने बात की, क्या हमने लाए हैं. और फिर आपका shipment detail and attachments. These are your basic requirements. This is, you will select your office or branch, whether you want a physical copy, and you declare your ANF or your IC is updated. Now it creates a draft copy. You come to this second slide. कौन सा सर्टिफिकेट आप इश्यू करवा रहे हैं? तो आप प्रेफरेंशियल COO इश्यू कर रहे हैं. द प्रोमेंट यू टेक प्रेफरेंशियल, आपको सारे अग्रीमेंट्स देंगे, दिखाई देंगे. अगर आपने गलती से नॉन प्रेफरेंशियल किया तो आपको नॉन प्रेफरेंशियल दिखाई देगा. इट विल नॉट टॉक अबाउट अग्रीमेंट्स बिकॉज ये तो नॉर्मल COO है. So I will go to preferential COO and I will then go to UK CETA or an agency depending upon which I want to get issued. मुझे अगर सेल्फ डिक्लेरेशन यूज करना है तो आई गो टू सेल्फ डिक्लेरेशन. नॉर्मल या रिट्रोस्पेक्टिव, अभी आपको सिर्फ बता दूं व्हाट इज द डिफरेंस. देयर इज अ टाइमलाइन फॉर एवरी सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड विद इन अ पर्टिकुलर टाइम लिमिट. कहीं अग्रीमेंट में 3 दिन है, कहीं अग्रीमेंट में 7 दिन है, कहीं अग्रीमेंट में 30 डेज है. यूके में 12 महीने हैं. So if you don't do it till 12 months, and then let's say there comes is, then it is retrospectively. यानी आप पुराना COO मांग रहे हो. You have not done it within the time limit. For everyone who does it right now, you will click on normal COO because you are within the time limit. सेल्फ डिक्लेरेशन है, बट उसकी जो रिपोजिटरी है वो DGFT के पास होगी. आई एम अज्यूमिंग नन ऑफ यू आर एन SEZ, अदरवाइज इट इज अंडर SEZ. अगर जस्ट फॉर रेफरेंस, इफ यू डू एजेंसी, आपके पास एक और एजेंसी खुल जाती है अपार्ट फ्रॉम दी अदर बोर्ड्स, इज द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल, सिल्क बोर्ड एंड अपेडा फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज. दीज आर एजेंसी बेस्ड सर्टिफिकेशन. अगर आपको एजेंसी से प्रूफ अप्रूवल चाहिए. इफ आई वांट टू डू सेल्फ सर्टिफिकेशन, DGFT is my agency for repository of the records. Which agency, depending upon where are you located, that RA, issuing offers Delhi. Now, these are some questions which will happen based on the FTAs. Now, you will not see this in another FTA because that is what we have agreed in the FTA. So the moment we have agreed certain things, that has to be part of that. Otherwise, it will not happen. So what have we agreed? We have agreed in the FTA, and I can go back to you just 1 second to show you on the slide. Now, if you look at the slide, we have agreed to mention 4 details, or rather 3 details. Exporter detail, producer detail, यानी manufacturer detail, and then the buyer detail, which is importer detail. तो हमने अग्री की है ये फॉर्मेट. हमने यानी इंडिया और यूके एज अ पार्टी, which means when you create the FTA with the certificate with online body, you also have to provide details. Na? So what you will have to provide? Are you a producer? Meaning, are you a manufacturer? Are you the exporter? Or are you exporter and producer both? यानी दोनों नाम आएंगे आपके. कहाँ नाम आना है आपका? Where are you going to be placed? So that is the context which you're going to put, which is going to be here. In this case, let's say I'm saying I'm an exporter as well as a manufacturer. So I'm exporter and producer. So both details will remain the same.
Again, I'll have to quickly come back to the slide screen for you to explain this concept. So there is one concept which is under Article 3.6, which talks about roll-up and absorption. So what is the roll-up? Where you are not going through the required change. आप change नहीं ले पा रहे. Why? जैसे आपको CTH चेंज करना है या चैप्टर नंबर चेंज करना है, आप रॉ मटेरियल का भी रॉ मटेरियल ला रहे हैं. So each party, if it's not originating material and goes further such satisfy requirement chapter. तो मैं import कर रहा हूं. Let's say I'll give you an example. I am not importing fabric. I'm importing yarn. So I'm going a backward integration. Then I have to make sure that is that processing enough or it is not. And if it is going through and it is converting into a yarn to fabric and then fabric to the finished goods, then I have to select the option given here, which is the roll up or the absorption principle. Because fabric तो वही है, चीज तो वही है, but मैं import कर रहा हूँ उसका raw material. So I'm going in terms of a backward integration rather than the normal integration, normal buying of raw material. So coming back to our certificate, is it roll up? I say no, I'm just buying raw materials. I will go here. Now comes my importer detail. I will put the buyer's name. UK is by default, इसमें कोई दूसरी countries नहीं आ सकती है. I will put the address. If email ID is known, but mobile telephone number is compulsory. Now somebody will say, sir, why telephone compulsory? Well, that's what is agreed in the format. Producer name, that is your manufacturer name. You are the producer, so you will put in your detail. You put your address, your number, and your email ID. As we all know, the columns marked with red are mandatory. Column marks other way around are not. Coming to your invoice number, 12345 is my invoice number. It is today's date. Now it can be any other currency or it can be GBP or US dollar. So I say it is British pounds. So I'm saying it is sterling pounds. INR उसने already अपने आप calculate कर लिया. I'm going to skip at the moment third party just to understand third party. Third party is when you are not invoicing the export. The export is invoiced by somebody else. So basically, you are a manufacturer, but you are selling it to the merchant exporter, and merchant exporter is going to further invoice. Or there are traders in between. आपने दुबई में एक्सपोर्ट किया और दुबई का बंदा यूके एक्सपोर्ट कर रहा है. आप दुबई बायर दुबई है, माल भले डायरेक्ट जा रहा है, यू आर सेंडिंग इट यूके, बट योर बिल इज नॉट गेटिंग इनटू यूके. Right? In that case, third party or third country invoicing will come. Here we will just say save, and I'll say the save next. Did I put all of this? Oh, I did not make this. Sorry. So I have done the basic requirement, and now this is a transactional requirement. So this is a transaction of export. What is my goods? So I will select the goods 3004, and I'm just doing I can do anything. I can do what? 5201. Okay, some 65 chapter handloom product 65020101. Handloom product. What is the sorry, 62052010. Okay, quantity I say 100 kgs, numbers, pieces. I can select what I want it to be printed. Do I want to print it gross quantity? Do I want to print both? I want to only print gross quantity. My net quantity is also 100. My value of invoice is 1000 GBP. It convert 1000 GBP into US dollars for a calculation purpose. INR value. Marks and numbers आपके shipment पे है. So let's say marks are A, B, C, India. Number and kind of packaging 10 boxes. And I will add this. So if you can see, these details have been added. The details of if any discount is there, I will do it. Now, what do I want to print? I want to print FOB in invoice currency. I don't want USD. I want the
foreign currency. So I will say FOB in foreign currency, which is my GBP. So it should print 1,000 and not $1,337. And neither it should print INR because that's not my buyer wants. I don't want the value, I will say not to be printed. तो अगर मुझे चाहिए तो मैं डालूंगा, नहीं चाहिए तो नहीं डालूंगा. अच्छा, do I want FOB value? Do I want invoice value? Because if you're doing transaction in CIF. So these are the options in terms of how you're printing you want. Now comes the import part. This is where most of you struggle. And this is where your difficulty is. Because you have to provide each and every detail as far as your details are concerned. Now, for that, actually, let me come back and share that there is a concept of cost sheet. कि आपको एक कैलकुलेशन शीट बनानी चाहिए एंड बनाने के बाद सबमिट भी करनी है डिपार्टमेंट को, जिससे ही आप ये डेटा फिल करोगे. इज दैट व्हेन वी डिड दैट क्वालिटी क्यूवीसी कैलकुलेशन, this is the format of the cost sheet. This is a general template. You can use the same where we say the export product, the FOB value, Indian origin कितना है, domestic imported origin कितना है, Indian origin कितना है, direct processing cost and overhead cost. More importantly, imported raw material का नाम, HSN code, bill of entry number, quantity, value, and the total of it, and then the Indian origin. And based on this calculation sheet and our, let me quickly go to that formula. Our formula here, we will determine that have we completed CTH plus 45%, CTSH plus 45%, 60%, 70%. हमने कितना किया है, कितना percentage हम are we able to reach, how much are we able to do it, right? So this is something which you need to go ahead and fill up for every certificate which you apply, because this is the cost sheet which will apply to you, right? Now, for any reason, if your goods are of 100% Indian origin, then you don't need to fill up, because what are we talking in the format on the system that is online is only imported raw material. Of course, there is a space for raw material which is domestic, but for the imported raw material, we are trying to put in the details. I'm at this point just आज के लिए अभी दिखाने के लिए I'm not going to put it. I'm going to say मेरा 100% Indian content. So then I'm only going to say what is my product. It's an handloom product. My FOB value was 1,000. So I'm going to say my imported content is 100. My raw material is this. Direct costing is 500 and 400. Now I will decide the declaration. Now declaration here is WO because I have no imported content. So I'll just edit this, select WO, update. Sorry, this will become my percentage is 0 imported content. And I will save this. If you have an imported content, तो आपको वो detail डालनी है और कितना percentage है, based on the calculation, you will get it. So let's say 99% domestic है, तो 99 हो जाएगा. If it is 1%, sorry, 15%, 20%, जितना imported है, you will be able to put that details. All right. Now, you will come to this place and probably somebody was asking some question. I will take that question just for it. Okay, do you need to do this for every shipment? Well, partly the answer is yes, and partly the answer now for UK is no, but depending upon how you look at it. I would personally explain and understand that you should do this for everyone. By reason is I will explain you, but just before that, now comes the shipping details. कि माल कैसे जा रहा है? Is it going by air, rail, road, whatever it is? So let's say it is going by sea. Shipment का date, shipping airway bill के उसका number. Now this your product is not related to bottling, which means liquid. तो bottling यहाँ पे हुई है कि नहीं हुई, आपके लिए कोई important नहीं है, आप not known करो. The second question, whether goods are transported through a
or stored through a non-party before being imported into the country. Now, this is nothing but transshipment. Bombay, so say Nhava Sheva, Jabal Ali, UK. तो जबल अली गया है तो आप यस करोगे. आपने डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी है या डायरेक्ट वेसल है तो आप नो करोगे, और आपको नहीं मालूम है तो आप नॉट नोन करोगे. इट इज मोर फॉर एन इंफॉर्मेशन. इट विल नॉट चेंज योर स्टेटस ऑफ द बेनिफिट. Similarly, you will select the port. Let's say I'm selecting INSA 1, which is Nhava Sheva, and I will select the UK port. So depending upon whichever I want, I can select the UK port. So let's say I want to select. So the port of discharge and the port of shipment is what I'm going to select. If I already have the vessel name details, I will put it here. If I have a departure date, I will put the departure date. So let's say departure date is 30th. मैंने अभी माल भेजा नहीं है. जो मैंने अभी तक नहीं किया है वो मैं अभी आपके पास आता हूँ. And this is probably going to answer somebody's question. Is do I have to do it for single shipment, or I can also do for multiple shipments? Please understand, this is one additional you can say feature of this UK FTA, जिसमें हमने एक ऑप्शन दिया है कि आइडियली तो सिंगल ही होता था. Every shipment you need it, but please understand the wordings. Multiple shipments for identical goods. अगर सेम गुड्स आपके हैं और आपको एक ही सर्टिफिकेट देना है तो आप 17 अगस्त से लेके you decide how much period you want and you take that, and for that period you can decide to give this common certificate and request the COO, I mean certificate officer, to issue COO. Mind you, this is a self certification, so this remarks is almost to yourself. I will save this, and now I will attach the entire list of documents जो हमने अभी तक इसकी डेटा हमने ऑलरेडी फिल की है. एग्जाम्पल, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग भी या BL. I will have the cost sheet. हमने जो cost sheet calculation की बताई. So if it is wholly obtained, I will give a declaration that this is wholly obtained. These are some standard document list because these are part of the standard software. Please note, without any attachment, your goods, your process will not happen. So I'm just going to go ahead and upload one blank upload just for the sake of our thing. So we attach this and I can go and save next. It will give me final declaration. Where are the goods on? They are goods on the sea, or I say they are already landed in UK. So I can say it is in UK, or I can say the goods are in India, depend where it is. Here I am saying goods are wholly obtained in India because I've said there is no imported content. If it was already there, it would tell me the goods have 10%, 5%, 2% imported content. I've just attached invoice. The more attachments you add, the more details can happen. All of these three are editable. You can edit the text once you are, if you want to edit or some change this. I will give final declaration. I will confirm this and I'll say save. If you can see on the top, all are green. I'm at the summary level. I can go and see the certificate. One second. Am I able to show you the certificate? Yes. So can you see signatory, exporter and producer? Signatory name is so-and-so, email ID, telephone, exporter detail, producer detail, importer, my serial number 1 or 0 HSN code. This is the product. It is WO, wholly obtained. This is non-party, nothing. It is not ticked mark, so this doesn't apply. There are no alteration done. It is a multiple shipment for shipment from 17th of August to 31st of January. So this is the format of the certificate, how it will look. Of course, now I have to sign and submit, make the payment and digitally sign and submit it. So I can go and sign it. Because it is self-certification, there is no cost. If it is an agency, there is a cost of 736 rupees. Right? At the moment this will happen, this will get attached and you will be able to download. So what happens is, you will upload the signature digitally and you'll be able to download your certificate and use it for your submission to your buyer. So these are the steps involved in your certification, which is there. Now, before I
say jump in back to you or allow people to ask questions, let me come back to some important aspects. This we have already done. This we have done. Now, what are your documents required? You require invoice packing list. Ideally, you should require a shipping bill because once you export it, fortunately, we have enough time in the India-UK agreement that it should not be a problem. If you are exporting goods by air, तो आप शायद पहले कर सकते हो. Otherwise, you can comfortably do within after your BL and airway bill is generated. Your cost sheet, as we have already discussed, or a declaration that the goods are of wholly obtained. Supporting import bills. तो डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक बिल्स, इंपोर्ट में बिल ऑफ एंट्री है तो बिल ऑफ एंट्री, बट आपके रॉ मटेरियल के बिल्स चाहिए, अटैच करने पड़ेंगे. ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट डू इट, सेल्फ सर्टिफिकेशन में आज आपको क्वेरी नहीं आएगी, बट टुमारो व्हेन द डिपार्टमेंट डज द ऑडिट, इट विल वेरीफाई एंड आस्क यू. Okay, you will be issued the certificate online and that should be good enough. Now, a couple of things which you need to understand. From the good old days where certificate of origin preferential was issued by a single agency, and that too only on the basis of verification physically coming to your factory, to a point where we started doing digital, and now to a point where we are doing self-certification, please understand कि आपके ऊपर as an exporter, the responsibility is more to give authentic and honest and correct data. Tomorrow, if you say, oh, sorry, I made a mistake, will not be acceptable. The moment it is self-declaration. So if I put in terms of your responsibility as an exporter, तो जब ये डिपार्टमेंट आके वेरीफाई करके इश्यू करता है वर्सेस नाउ व्हेन यू गो एंड डू सेल्फ सर्टिफिकेशन, योर ऑब्लिगेशन एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज इंक्रीज 10 times. Second, there will be audit, there will be verification, there can be demand by the UK government customs for verification of data. You cannot say, oh, sorry, I made a mistake, or I don't have a invoice copy, or I don't have a copy. No, you have to have it. So whatever the difference you have to understand, it is ease of doing business. Process को simplify किया है, compliance को नहीं. So we are not saying that you should be doing away, forget about documentation. No. Compliance, that means any supporting backup paper of your purchases, anything which is required, which you are going to be justifying, you should have it. The difference is that document earlier, let's say, or any department, if I had to come and go to an authority, it was consuming one day, it was consuming some time. We have reduced that time and effort to say you do it at your fingertips, but compliance is important. UK customs or any customs can and will demand specific details and data which you will have to submit through Indian entities like the DGFT, like the EIA, like the Export Promotion Councils for verifications. And the chances are, the more the self-declaration, the likelihood of asking are better. So please be very clear that yes, it is ease of doing business, but not shortcut of compliance. So you should have all your supporting details with you. Number two, for traders or merchant exporters, I'm sorry, but manufacturer details from manufacturers on this has to be available with you. Remember, these details are not shared with the buyer. It is kept with the authority. Buyer को तो आप सिर्फ certificate दे रहे हो, which is the end format. What is your calculation? What is your cost? Nothing has been disclosed. So you don't have to worry about your data being given to the buyer कि अच्छा कितना profit है या क्या कमा रहे हो, किससे ले रहे हो. But the answer is you will have to provide the details. So if you are not a manufacturer, please talk to your producer, please talk to your buyer and get it. Instances where you do not know, qualify it as imported and then see, are you able to still qualify for the benefit? Then apply, rather than saying, हाँ Indian ही होगा हम समझ लेते हैं, but then you will realize that quality or that raw material is never produced in India. So then you should be very, very clear to be, declaring rather than misdeclaring it. All right. Finally, इस सबका फायदा क्या? The ultimate thing or the benefit is market access. What it gives you access to the new market like the UK. Price realization is better कि आपको सस्ता नहीं करना है, आपको डिस्काउंट नहीं देना है. The buyer will be able to get the benefit irrespective.
You are able to enter new markets, so your new product development and R&D will happen. Ripple effect. Once you start doing one market, वहां से that FTA market will allow you to access other markets. So if you start doing UK, Europe becomes an access. If you start doing UK, Canada and other countries or developed country become a market. And finally, mutual gain. You can get to buy raw materials from these markets at the same time at the duty free and export it also to the other markets. So the benefit is both the ways. Of course, I'm speaking only today on the export side, but if you have raw material to import from UK, if you have raw material to import from any markets related to FTA, तो आप वो भी benefit check कर सकते हैं. And just before I wrap it up or I'll tell you to close, let me just quickly show you the place where you'll be able to search the details about whether your export or your details are there. Let me quickly switch the screen. So whether your product is available under FTA or not, you can just quickly go to this Trade Connect website. Now here you don't even need to log in. And under where to export, there's an option called Tariff Explorer. Okay. Now I see a lot of messages on the chat. Before quickly going to any other message, quickly anybody can just give me one HSN code. कोई भी एक HSN code डाल दीजिए. Anybody, any product, give me an HSN code. Otherwise, I will take my HSN code. I mean, okay. Chalo, we got it. 680221. Now, always remember to start with a 6-digit HSN code. 8 digits is Indian HSN code, Abhishek ji. Always prefer 6-digit to search. So you have a Tariff Explorer, which doesn't even require a login access. You select the country as UK. I put in the HS code. It will load the data. Shivani, just 1 second. Maybe you all can do it parallelly if you're having on your, if you're on a laptop or you're on a system, just go to Trade Connect. That is trade.gov.in. You can parallelly go and do this right now along with me, and you will be able to see the answer. Now, this is something which you should be aware of, that along with this, because there are a lot of data, there will always be a little time. So 68022100 is the HSN code for the UK for the product which we are searching of Abhishek Gautam. Abhishek, zero duty pehle se hai, so this is 00 for you. Okay, unfortunately, no benefit for you directly. Quickly, let me try. Just a second. 940360. Let's quickly check this. So this is the Government of India, Ministry of Commerce database for all your FTA, and it is not only for UK. You can do it for any other. So if you are Oman, you are looking at. If you are looking at Australia, so the FTAs which we have already signed, अगर आप यहाँ पे देखना चाह रहे, you can select any country and it will give you the details. All right. So this is something which you can use this Tariff Explorer. Let me just quickly see for Shivani Loyaji's HSN code, and then we'll answer those questions for people. So one thing is obviously a challenge that there is huge database at the back end, so it takes little time. Okay, so Shivani, I don't know. Okay, let me go back to your 600. I don't know what was your HSN code of the product, but I'm just going to put any other wooden furniture 9090 just for our purpose to show. Okay, so unfortunately, this is also 0 already, and 0 is this year. Now, just assuming that there was 2% or 4% and it would have become 0, just things which you have to understand. What is the outcome? It says India UK CETA agreement, it has become 0. And look at the product specific rules. So somebody was asking, do we have to check the product specific rules? It is also available to you here. It says it has to be changed in tariff heading plus standard QVC chahiye. So the detail is already available here. You don't need to rush or go anywhere. However, if you wish to go to commerce.gov.in. Okay.
I'll just change the language to English. This is what I am comfortable. You can continue with Hindi or any other language. Go to international trade. I hope you are seeing the same thing, right? Yeah, okay. So you see trade agreements. So you click on trade agreements and all the official, the total legal document, the data is available here. So if you look at the New Zealand agreement fact sheet, the agreement, the India EU text, the EU trade agreement copy, the New Zealand fact sheet, Oman, now UK synopsis and UK entire CETA. Now when I go to UK CETA, आप देखोगे, you will see so many. There are about how many? 7 pages. This is each page has about 10. If I change this to 50, you will see so many data available. So you can specifically go to the specific data and the detail about each. So basically, product specific rule is Annexure 3A. आप PDF download कर सकते हो and आपके लिए रख सकते हो, and you can examine it. You don't need to go on the internet. You can just download it for yourself. Annexure B, this is a list of, but of course, this is an Excel file. This may not be very visually clear. ये आपको शायद नहीं समझ में आएगा. Then you can go to the trade contract. The data or the reference point is the same. It's the agreement. This is the raw data, and that is more, data in a little understandable manner. It is up to you. If you can understand the raw data, if you can understand the technicalities, you will be able to look at it here. But this is the official information. These are 61 pages. You will see each of them. What happens for the rules regulation? What happens if you misdeclare? What is the current? What is the timeline? What are the government procurement details? So and so forth. So each of these agreement, and this is not only for UK, it is for every other country as well. Whichever FTA we sign, all of these are available right here at a click of a button. You don't need to go anywhere, and it will be all available here. All right. So that is the specific requirement of the FTA. And finally, we come to the most important, is to say thank you to all of you. Right? Thank you so much, guys. I hope it was understandable. कोशिश पूरी की थी हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ में आए वैसे करें. I hope it has been understood in both the languages. However, if I'm not been able to explain the point या किसी को कुछ challenges हैं, please let me know. And yes, we will take question answers. मीर साहब, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया है, प्रैक्टिकली बताया उसके क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव साइड्स हैं. और सर. चैट सर आप शेयर बंद कर दें, देन विल टेक अप द फर्स्ट में चैट में क्या क्वेश्चंस हैं. जी सर. राजेश जी कुछ क्वेश्चन है सर, उनका आप देख पा रहे हैं चैट? सर मैं ले लेता हूँ. यस. जी. So let's quickly go to the questions and 1 second. Yeah. Okay. Hindi please. For a merchant exporter who purchases, so अमित गोयल जी का क्वेश्चन है, या उसके पहले तेजेंद्र जी का क्वेश्चन है, डू वी फिल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फॉर एवरी शिपमेंट एवरी टाइम? यूके में आपके पास एक चॉइस है, बाकी सारे में फंडामेंटली आपको हर बार करना है. उसका एक रीजन भी आपको मैं समझा दूं लॉजिकली, एंड आई वुड स्टिल गो विद के आप हर एक में करिए. उसका लॉजिक रीजन ये है कि हर एक बारे में आपका एफओबी परचेस प्राइस और आपके रॉ मटेरियल के परचेस प्राइस चेंज होंगे, तो आपका रेशियो चेंज हो सकता है. तो कभी ऐसा ना हो कि आप गलत हो. अगर आप बॉर्डर पे हो 45% के, तो कहीं पे अगर आपकी एफओबी प्राइस घट गई पर आपकी परचेस प्राइस उतनी रही, या आपकी परचेस प्राइस बढ़ गई, तो रेशियो चेंज हो गया, देन यू माइट बिकम इनएलिजिबल. तो बेटर ये है कि आप हर एक में करिए. ऑलराइट. अमित गोयल जी का क्वेश्चन है कि फॉर मर्चेंट एक्सपोर्टर हु परचेजेस फिनिश गुड फ्रॉम इंडिया, डज मैन्युफैक्चरर नीड टू प्रोवाइड कंप्लीट कॉस्ट शीट? अमित जी, द आंसर इज यस, बिकॉज इफ अगर आप कैसे डिक्लेयर कर पाओगे, आप समझिए, यू विल हैव टू हैव अ बेस. अगर आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि यार ये सब कुछ है, तो देयर हैज टू बी सम बेस, राइट? तो अगर वो बोल रहा है कि नहीं हर एक चीज इंडियन ओरिजिन है, तो आप उससे डिक्लेरेशन ले लीजिए कि इट इज 100% इंडियन ओरिजिन, देयर इज नो इंपोर्टेड मटेरियल. आप उससे सर्टिफिकेट ले लीजिए, डिक्लेरेशन ले लीजिए, एंड देन ऑन दैट बेसिस यू गिव. बट अगर वो इंपोर्टेड कंटेंट है, तो फिर आपको भी इंपोर्टेड कंटेंट कॉस्ट शीट में देना पड़ेगा. सो इफ you as a merchant exporter, you are dependent on a manufacturer. राजेश कुमार जी सर का क्वेश्चन है, वी हैव मैप्ड एप्लीकेबल पीआरसी बेस्ड on respective HSN code and chapter heading. Yes. However, if a single export invoice contains multiple products such as WOPE PSR, how should we select?
राजेश जी, जो फॉर्मेट है, ओके, लेट मी क्विकली ओपन दैट। एक सेकेंड दे दीजिए, आई विल ओपन द विंडो फॉर यू। So I'll tell you what is the answer. The answer is हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको डिक्लेरेशन देना है कि वो पीई है, डब्ल्यू है या पीएसआर है। तो जितने आप प्रोडक्ट्स डालोगे उतनी बार आपको उसके बारे में डिटेल डालनी है। इट इज दैट डिटेल इज नॉट क्यूमुलेटिव। तो इन योर इनवॉइस इफ देयर आर 3 लाइन आइटम्स, तो आपको तीनों 3 लाइन आइटम के लिए डिटेल देना है। आई शो इट टू यू जस्ट हियर बिकॉज हमने एक डाली है, बट आपको मैं दूसरी भी डाल के दिखा सकता हूँ। 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड हियर, वेयर डू आई शेयर? जूम, yes. Okay, so the question is for Rajesh ji, but it is so Rajesh ji, ये हैंडलूम is one item, right? अभी मैं यहाँ पे एक दूसरी आइटम ऐड करता हूँ, 7802 others, okay, 78020090. I'm just putting this. Let me put it as 250 kilogram. This is 20. This is marks and number is 2. Let's say 1 bag. Right now I want gross quantity and I have added. Now if you see there are 2 items. जो आपकी क्वेश्चन है वही है कि मेरे 2 या 3 या 4 है। Now if you go back to the नेक्स्ट एंट्री, यहां पे इनपुट कॉस्ट में आपके पास दोनों है। सेम वे यर ऑल्सो क्राइटेरिया आपको दोनों की सिलेक्ट करनी है। एक डब्ल्यू हो गया, देन यू गो बैक टू द सेकेंड आइटम, आप उसकी सिलेक्ट कर लीजिए, CTH है, CTSH है, चेंज विथ स्टैंडर्ड क्वालिटी जो भी है, जो विच एवर इट इज। इसमें 25% आपको डालना है कि मैंने इंपोर्टेड कंटेंट है, 25% मेरा standard hai, I am putting it. So answer to your question is, in one invoice, if you have multiple HSN code, you'll have to do each of them line wise. So that is there. So as many as line items you have, you'll have to do that specifically. Second, your question is, if we have single item, how should we select appropriate for products where applicable PSR? हमने ये बता दिया. For example, हमने कर दिया, if raw material used in the supplier are imported or not original, how should we verify that by the document? So answer is, आप परचेज पे लिखवा लीजिए कंट्री ऑफ ओरिजिन। अगर आपको नॉर्मल रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो इन ट्रेडर से ले रहे हैं तो आप उनसे लिखवा लीजिए विच इज द कंट्री ऑफ ओरिजिन। दैट्स हाउ इट विल वर्क। यू हैव टू गो विद योर, इफ यू आर नॉट इंपोर्टिंग इट तो आपको वो एटलीस्ट लिखवा के लेना है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है। दैट शुड बी अ बेस। आई कैन नॉट, आई हैव टू ट्रस्ट माई सप्लायर। आई विल ऑब्वियसली ट्रस्ट माई सप्लायर सेइंग दैट ओके वो बोल रहा है तो नहीं। My buyer is asking for UK authorized trade agreement, UK solicitor reviewed legal agreement by laws. UK authorized trade agreement. I'm not Parth. I'm not clear with this question, to be very honest. डॉक्यूमेंट तो दोनों की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ओपन डोमेन में है। ये तो Could you please little bit describe how beginner to find international buyer? सर ये अलग टॉपिक है, एक अलग सेशन हम ले सकते हैं। कैन यू प्लीज आंसर माई क्वेश्चन? जी मिहिर सर, सेकेंड टाइम मीटिंग बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू हरीश चंद्र जी, आपको भी अच्छा लगा तो हमको अच्छा लगेगा। ये अलग से When applying COO, should we apply this before or after BL? अनीश, सेल्फ डिक्लेरेशन आप BL के पहले भी कर सकते हो, बट क्योंकि मेरा ये मानना है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट 12 महीने तक का टाइमलाइन है। दूसरे में क्या था, 3 दिन है, कुछ एग्रीमेंट्स है जिसमें 3 दिन 7 दिन में अप्लाई करना है। नहीं साहब, शेयर हटाएंगे। सॉरी 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 सॉरी। सो क्योंकि क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा है, आई विल ऑलवेज से आप BL या एयरवेल बिल कर दीजिए फिर करिए, बिकॉज देन your even your authenticity becomes more better and you are also clear. So I will always prefer Anish ji to apply it after you get BL and airway bill, at least for UK agreement. Amit ji, buyer manufacturer is not disclosing. सर मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए क्या चैलेंज है? अगर मैन्युफैक्चरर नहीं दिखा रहा है तो आप खुद नहीं दिखा पाओगे ना, क्योंकि आप क्या बेसिस पे करोगे सर? I am going back to previous question. Elaborate. Suppose I obtain for a specific product, do I have to fill out again and again for every shipment? तेजेंद्र जी, मैंने यही बोला है आपको, अगर आप एक ही सेम प्रोडक्ट पे ले रहे हो और आपको मालूम है तो आप वो पीरियड सिलेक्ट करके आप रख सकते हो और वही सर्टिफिकेट आप दे सकते हो।
पर अगर आप पीरियड नहीं सिलेक्ट करते हो तो आपको एवरेज टाइम करना पड़ेगा। तो अगर आपका सेकेंड शिपमेंट थर्ड शिपमेंट वही प्रोडक्ट का है, exactly the same product, then you can go ahead with multiple and you have to select that multiple period in your first COO, but otherwise आपको हर एक बार करना पड़ेगा। Tejasvi, all paintings are made in India and handmade original paintings under so and so. However, every order placed by the client, in this case, do I need to apply certificate? As I said, same answer comes to Tejasvi also, like Mr. Tejinder. अगर आपके same products हैं, the product is exactly the same. So it's your oil painting, same HSN code, same thing. Tejasvi, you can go for a multiple certificate of origin uh, in that period and you can go with. डू यू रिमेम्बर कहीं पे HSN कोड या कुछ चेंज हो जाएगा तो सामने वाले को प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको बी वेरी वेरी श्योर दैट इज एग्जैक्टली द सेम प्रोडक्ट एंड फॉर सेम प्रोडक्ट मल्टीपल पीरियड इज अलाउड। अदरवाइज आपको हर एक के लिए लगता है। इनफैक्ट यूके इज द ओनली एग्रीमेंट वेयर वी हैव दिस, अदरवाइज आइडियली हर एक इनवॉइस के साथ में सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जाना है। जितने इनवॉइस उतने ही सीओ लगते हैं, विच इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। इन यूके मल्टीपल इज बीन अलाउड, so you can take advantage of it with the condition as we said. For products sourced from vendors in India, the supplier origin declaration should be sufficient. Do we need to collect bomb raw material HSN code from? राजेश जी, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे आपने कॉपर मग्स लिए हैं या कॉपर जग्स लिए हैं, यू विल हैव टू एनी चॉइस बिकॉज यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, तो आपको उसको बॉम्ब तो लेना ही पड़ेगा ना, बिकॉज आपको कॉस्ट शीट बनानी है। पर आपको डिक्लेरेशन भी लेना है कि ये इंडियन उसने बनाया है और फिर उसका रॉ मटेरियल कहाँ से है, एटलीस्ट उससे डिक्लेरेशन तो लेना है, क्योंकि नहीं तो कॉस्ट शीट के बिना कैसे करेंगे सर। आपको कॉस्ट शीट, अगर आप वही क्वेश्चन आ गया जो आई थिंक अमित जी का था, या ये था कि मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं आप, तो आपको मैन्युफैक्चरर से डिटेल तो लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि द कंडीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कि ये मटेरियल इंडियन ओरिजिन है कि नहीं है इज नॉट जस्ट बिकॉज समबडी हैज सेड इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन माल में रॉ मटेरियल अगर इंपोर्टेड है देन योर कंडीशन हैज टू बी बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन। तो अगर कॉपर शीट या कॉपर के कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड है तो वो एज गुड एज आप इंपोर्ट करो या वो आपके मैन्युफैक्चरर ने इंपोर्ट किए, कंडीशन रिमेन्स द सेम, राइट? सो दैट इज हाउ यू हैव टू जस्टिफाई। ओके, अभिषेक गुप्ता जी हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अभिषेक जी, गो अहेड अभिषेक जी। अभिषेक जी अनम्यूट करिए अपने आप को। मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी। हेलो। जी सर। हेलो सर, ये एक्चुअली इको आ रहा था मेरे मोबाइल में, तो बस मैंने इसीलिए कहा था कि इस आवाज कैसे ठीक होगी। अभी तो हाल फिलहाल मुझे यही पूछना था। क्या क्या? अच्छा, नहीं सर, इको आ उसका रहा है सर, क्वेश्चन एक्चुअली में आप जो भी टाइम बोल रहे हैं ना वो रिपीट हो रही है, इको आ रहा है, तो प्रॉपर आवाज नहीं समझ में आ रही है। किसी और का कोई क्वेश्चन पूछना चाहे मीर साहब से? सर एक क्वेश्चन आंसर्स के उसमें है, आई जस्ट रन थ्रू दैट। मोहित चावला जी का क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन इनवॉइस हैव मोर देन 2 HSN कोड? मोहित जी आई जस्ट एक्सप्लेन यू, हमने बता दिया हमने मैंने। लाइव कर दिया था कि 2 3 4 जो भी है। जॉब वर्कर पार्थ का क्वेश्चन आया वापस। पार्थ, माय बायर इज आस्किंग फ्रॉम यूके। पार्थ अनम्यूट करिए, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज ही आस्किंग? वो एग्रीमेंट मांग रहे हैं, वो सॉलिसिटर से कुछ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? सॉलिसिटर से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। पार्थ आप पार्थ अनम्यूट जी, कर सकते हैं। पार्थ मिस्टर जी पार्थ, अनम्यूट करिए। मिस्टर पार्थ, हाँ जी। आपका जो चैट में क्वेश्चन था वो क्लियर नहीं है, आप पूछें क्या क्वेश्चन था आपका? My buyer is asking for a UK authorized trade agreement. It should be UK solicitor reviewed agreement. नहीं नहीं, पर ये FTA के बारे में नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहा है? आपके बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं या FTA के बारे में बात कर रहे हैं? No, मतलब एक हमारा शिपमेंट बायर था, तो ही वांट्स कि अग्रीमेंट करना है पहले उसको, बट इट शुड बी UK authorized, and I told him that I have COO available, but हाँ, he denied नहीं for नहीं, the एक मिनट पार्थ जी, मेरे ख्याल से ना दो दो अलग अलग मुद्दे पे बात हो रही है। एक वो जो मेरे ख्याल से आपको उसके साथ जो कमर्शियल अग्रीमेंट करना है उसके लिए वो बोल रहा है यू हैव टू टेक अ यूके सॉलिसिटर, वहां के सॉलिसिटर का आप लीगल यानी लॉयर का आप लीजिए और वो आपको एग्रीमेंट बना के देंगे उसके लेटरहेड पे, वो वाला चीज है।
दूसरा है गुड्स रिलेटेड, या जब ये एग्रीमेंट आई मीन आपका ऑर्डर आ चुका है और आप माल भेज रहे हो, तो उसमें ये एफटीए काम आएगा। आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी आप ले लीजिए क्या है। फर्स्ट वाली जो आपने फर्स्ट वाला बोला। तो फर्स्ट वाले के लिए तो सर वो तो आपके और उसके एग्रीमेंट के, आई मीन यू हैव टू अग्री और डिसअग्री कि यार मैं क्यों यूके से लॉयर से लेके आओ, आप अग्रीमेंट बना लो। अगर आप एग्रीमेंट लॉयर से बना के, जो आप कमर्शियल अग्रीमेंट जो आपको और आपके बायर को साइन करना है, आप तो इंडिया में बैठे हो तो आप शायद सोचो कि मैं इंडिया लॉयर से ले लूं, या वो यूके से लेगा, तो आप बोलिए, उनको बोलिए कि आप यूके के सॉलिसिटर से आप एग्रीमेंट बनवा लीजिए, एंड इफ इट इज दोनों लोग ओके फॉर रिव्यू यू, कर सकते हैं एग्रीमेंट को। आप रिव्यू करके आप देख लीजिए, अगर सही है तो आप एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। इट इज अ कमर्शियल एग्रीमेंट, इट इज नथिंग टू डू विथ व्हाट वी तो आर FTA, डिस्कसिंग टुडे। yeah. ओके ओके ओके। Thank you. Now we have Mr. Mohit Chawla ji. यस मोहित सर। Mohit Chawla ji. हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं अपना कपड़ा जॉब वर्क्स पे बनवाता हूँ यान देके, हाँ तो उस केस में क्या मेरे को मैन्युफैक्चरर तो मैं खुद हूँ ना एग्रीमेंट के लिए? सर, आपके पास रेफरेंस है ना, आप डिक्लेरेशन दे दीजिए, आप खुद बाय कर रहे हो ना, आपके पास तो सारे डेटा है एज ए जॉब वर्कर, आई मीन जॉब वर्क नहीं, करवा रहे हैं, बट आप तो ही हाँ रॉ मटेरियल ला रहे हैं, तो आपके पास हाँ जी। परचेज बिल्स हैं, आपके पास प्रोसेसिंग के बिल्स हैं, आप करिए, नो प्रॉब्लम। तो मतलब उसमें मैन्युफैक्चरर में मेरी डिटेल सर ही आएगी? मैन्युफैक्चरर में नहीं, उसकी डिटेल आएगी, आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो, बट आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो डिफरेंस बिटवीन एक जो मर्चेंट एक्सपोर्टर जो डिपेंडेंट है हाँ वर्सेस हाँ, मोहित जी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उनके पास ही परचेज की डिटेल्स है। ठीक है। तो आपके पास परचेज डिटेल्स आपके पास डायरेक्ट है, बट मैन्युफैक्चरर में, प्रोड्यूसर में तो वही है ना सर, आप नहीं हो। लेट्स बी वेरी क्लियर, क्योंकि जॉब वर्क भी करवा रहे हो तो लीगली तो रिकॉर्ड पे है ना कि आपने माल भेजा, और कपड़ा से लेट्स से फ्रॉम फैब्रिक टू टेक्सटाइल आर्टिकल, तो किसी और ने बना के आपको वापस दिया, उसका जॉब वर्क का बिल भी आएगा वापस। और मतलब अगर अगर प्रिंट प्रिंट हो रहा है तो भी उसमें जॉब वर्कर की डिटेल डालनी है? सर बिना प्रिंटिंग के प्रोडक्ट, अगर आपका प्रोडक्ट बनता है तो अलग बात है, बट अदरवाइज तो हाँ। नहीं नहीं, अगर प्रिंटिंग हो रही है उसमें मेरे पास प्रिंटिंग का बिल है, तो हाँ जहाँ पे प्रिंट हो रहा है वहां पे मैं प्रिंट का बिल डालूं, जी और जहाँ पे मैं कपड़ा वीव करा रहा हूँ उसका मैं जॉब वर्कर का वो डालूं डिटेल्स? जी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मोहित जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। जी मिस्टर सर। संजय राय जी। संजय राय जी अनम्यूट करिए प्लीज। मीर सर, मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा प्रॉपर समझिएगा। मैं दुबई बैठा हूँ, ठीक है, मैं इंडिया में हूँ, बट मेरा वर्चुअल ऑफिस दुबई है, राइट। ओके। अब मैं माल यहाँ से ले रहा हूँ अपने नाम पे, दुबई में XYZ मेरी कंपनी के नाम पे, और हाँ मैं वहां से अपने बायर को एक्सपोर्ट दिखा रहा हूँ। माल तो सीधा जा रहा है, जो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन पहले भी बताया था, ठीक है। अब इस हाँ केस में मेरा ऑफिस तो दुबई है, बट एक्चुअल में यहाँ से लेके जस्ट एक बिलिंग घुमा रहा हूँ कि बायर का पेमेंट मेरे पास दुबई से आता है और मैं यहाँ पेमेंट कर रहा हूँ। तो करेक्ट। एक्सपोर्टर तो XYZ कोई और है, मैं एक्चुअल बायर के लिए कंसाइनी, मतलब कंसाइनर हो गया, कंसाइनी हो गया, सॉरी, है ना। हाँ इस हाँ केस में मैं कैसे सर्टिफिकेट दूंगा? अब यहाँ का वेंडर तो मुझे देगा, अब मैं चूंकि यूके में हूँ नहीं, मैं हूँ दुबई में, तो करेक्ट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर और मेरा बढ़िया माल है, यूके जा आपने रहा है, आपने मेरा काम आसान कर दिया। तो आ, बताइए। आपको अगर थोड़ा मैं वापस पीछे लेके जाओ, जब हमने स्टार्ट किया था एक कॉलम आई थी, थर्ड कंट्री थर्ड पार्टी इनवॉइस, हम्म। बस यू आर एग्जैक्टली दैट लाइव केस। तो ठीक है। नॉर्मली 99% ऑफ द केस में ये कॉलम कभी यूज नहीं होती है। आपके अच्छा। वाले केस में तो हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने मुझे ऑर्डर दिया है यहाँ पे हम्म। कि यूके में बायर को भेजना है, हम्म। तो मेरा कंसाइनी यूके है, पर मेरा बिलिंग तो आपको जाने वाला है, नेचुरली। और आपका बिलिंग दुबई से यूके जाएगा। ठीक है। तो आप एक इनवॉइस बना के मुझे दोगे, विच इज कॉल्ड हम्म। थर्ड पार्टी इनवॉइस, क्योंकि क्लियरेंस आपके इनवॉइस पे होने वाली है। नेचुरली। हम्म। मैं मेरा इनवॉइस जो आपको देने वाला हूं, हम्म। उसके ऊपर प्लस थर्ड पार्टी इनवॉइस जो आपका है, उसकी अच्छा। डिटेल डाल के मैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इश्यू करवाऊंगा, जो हाँ। आपको उसको देना है, जहां पे उसकी इनवॉइस नंबरिंग आपकी वाली होगी, मेरी नहीं होगी। ठीक है। अब एक सेकंड क्वेश्चन है सर। जी। अब इस केस में मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे लोकल एक्सपोर्टर को आगे पता चले कि मेरा बायर कौन है, व्हाट एवर जो भी है। देन इट कैनॉट हैपन सर, सॉरी। ये नहीं हो सकता। Then it cannot, because you have to understand the हाँ। agreement is between India and UK for हम्म। Indian origin goods. हाँ।
राइट, यू So राइट, you मैं दुबई से cannot, you can take the benefit because it is an Indian origin goods, but you हम्म, cannot in Dubai issue a हम्म, certificate because Dubai doesn't have any authority. नेचुरली समझ गया So मैं, I तो वो can देना do ही it पड़ेगा। provided you give me all the disclosures. ठीक है, ठीक है, ठीक। Mr. सर Garg, एक इसमें merchanting trade transaction is what it is correct. It is not merchant trade, but merchanting trade. आप third party country is used for merchanting trade transaction. Correct. You are right. सर एक ये चैट में क्वेश्चन है सर, आई एम इम्पोर्ट सम कंपोनेंट फ्रॉम यूके कस्टमर आफ्टर गेटिंग वी एड वैल्यू एंड एक्सपोर्ट सेम कस्टमर, कैन आई गेट एफटीए बेनिफिट? अनिरुद्ध जी, बहुत ज्यादा अच्छा बेनिफिट है उसमें। दोनों ऑप्शन है। नंबर वन, पहले यूके से जो आप ला रहे हो ना, वो जैसे हमने अभी ट्रेड पे एक्सपोर्ट देखा था, यू कैन चेक ऑन इंपोर्ट कि अगर उस पर ड्यूटी फ्री है कि नहीं, तो आपको ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी वो क्लैरिटी हो जाएगी। अज्यूम करिए ड्यूटी नहीं लगती है तो वेरी गुड, लगती है तो भी वेरी गुड। देन यू एड दैट इनटू योर फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्ट। द गुड पार्ट इज, जो आपने यूके से इंपोर्ट किया है ना, that raw material for the purpose of calculation will not be considered as imported, it will be considered as domestic। और आप उस बेसिस पे, अगर आपका वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, यूके इंपोर्टेड रॉ मटेरियल प्लस डोमेस्टिक मटेरियल को ऐड करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपको एफटीए बेनिफिट मिल रहा है तो वेरी गुड। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, मिस्टर राकेश यस, चंद्रा प्लीज। राकेश जी ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। मिस्टर राकेश चंद्रा अनम्यूट करिए प्लीज। if we have three job worker for the same products, how do we represent manufacturer? Sir, ideally Rakesh ji, answer should be where your actual end product is being processed। तीन जगह पे तो प्रोडक्ट नहीं बनती होगी। आई एम अज्यूमिंग इट इज हैपनिंग एट some processes are happening, कहीं पे प्रिंटिंग हो रहा है, कहीं पे स्टिचिंग हो रहा है, तो फाइनल जहां पे एक्चुअल प्रोडक्ट बन जाता है दैट इज कंसिडर्ड एज योर मैन्युफैक्चरर। थैंक यू सर, थैंक यू मीर साहब, ऑलराइट सर, आपने जो सेशन लिया बहुत अच्छा सेशन था। आई होप द मेंबर्स वे ज्वाइंड इन में, मतलब उनको पूरा बेनिफिट मिला होगा। जो आपने कहा है कि इस पूरा का जो क्रस है ये है कि प्रोसेस इज सिंप्लीफाइड बट कंप्लायंस हैज टू बी फॉलोड। यस सर। With that, we thanks all the member and special thanks to Mir Saji and JP Singh ji थैंक यू सर, for this session, and we will meet again in the next session with other different topics. Thank you, sir, and thank you, members. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वो जेपी सिंह चला गया।